Hello guys, welcome to online Web Tutor presented by profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue JS tutorial for beginners in Hindi and this is our part 44. In this video session guys, we will discuss about routing in Vue JS application. And also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear concept about Vue JS tutorial. So basically guys, in this video session we will discuss about routing. Okay, so routing क्या होती है? So just back to browser. So this is our front end of our application. So right now we have no content inside this app.vue. Okay, ये app.vue के अंदर हमने किसी components को import नहीं किया हुआ है. That's why it is empty. Okay, अगर मैं एक छोटा सा content लिख दूँ, something called h1 tag, and let's say that welcome to app. Okay, save कर दूँ, and this is something like that. ओके सो राउटिंग सिंपल इन द सेंस गाइज, अगर आपने काफ़ी सारे वेबसाइट्स विजिट की होंगी, अगर आपने अबाउट अस पे क्लिक किया होगा, देन समथिंग यूआरएल लाइक अबाउट अस. ओके, दिस इज यूआरएल समथिंग लाइक दिस. अगर आपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक किया होगा, सो समथिंग कॉल्ड कॉन्टैक्ट. एंड ऑल्सो विथ प्रोडक्ट्स, लेट्स से प्रोडक्ट्स. ओके सो these are the URL something like this. So इसी तरीके गाइज हम कुछ करने वाले हैं ताकि हमारे Vue.js एप्लीकेशन में URL के पैरामीटर्स के बिहाफ पे, मीन्स URL के इस राउटिंग के बिहाफ पे हमारे लेआउट और पेजेस चेंज हों. ओके, suppose we are making an application and application contains home page, about us, services, products and many more tabs. Okay, तो हम किसी मेन्यू के क्लिक पे कैसे redirect करें? So this is how the basic concept of routing in Vue.js application. Okay, so basically guys, routing start करने के पहले we need to install a package called Vue Router. Vue Router use करना पड़ेगा basically to use the package of routing. Okay, so basically this is a command that we have to run to install. The command something says npm install Vue Router and save as a flag. Okay, so basically guys, इस command को run करते ही हम Vue Router को install कर सकते हैं. Okay, so before starting this video session guys, actually I have installed, मैंने उसे install कर लिया हुआ है, and now you need to install this package before learning this video session. Okay, so just back to editor. So basically guys, अगर मैं open करूँ अपना package.json file, so inside this dependency object, inside this dependency, as you can see that I have installed Vue Router. Okay, something 3.0.1. Okay, so before starting this video session guys, आपको ये download करनी पड़ेगी ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए. Okay, so after installing, मैं जाऊँगा main.js file पे, and before that just get rid of all these. सो बेसिकली गाइज, ये रही हमारे व्यूज़ फोल्डर, जहाँ जो एक नया फोल्डर क्रिएट किया हुआ हमने एप्लीकेशन के अंदर. और इस व्यूज़ फोल्डर के अंदर बेसिकली आई हैव मेड 4 फाइल्स कॉल्ड about.vue, contact.vue, home.vue and services.vue. बेसिकली ये वो कंपोनेंट्स है गाइस जो कि हम URL पे अगर home टाइप करें तो बेसिकली इट विल redirect to home.vue. अगर हम contact पे क्लिक करें सो बेसिकली इट विल ओपन दिस फाइल. सर्विसेज क्लिक कर, सर्विसेज अगर मैं पास करूं सो दिस इज द फाइल एक्चुअली रेंडर. ओके, सो जस्ट गो टू main.js फाइल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी Vue Router. ओके, सो लेट्स से इंपोर्ट Vue Router from just let's say Vue Router. ओके, सो सक्सेसफुली वो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमने इसे इंपोर्ट कर लिया हुआ है. ओके, नाउ वी हैव टू यूज दैट. सो vue.use and let's say that Vue Router. So now actually we are using Vue Router. Okay, so before that guys, actually Vue Router में अगर हमें लिंक्स प्रोवाइड करने हो हमारे अपने पेजेस के like about, contact, home services, so we have to make a instance of this Vue Router. Okay, हमें इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा. So let's say const, let's say router equal to new, let's say Vue Router. Okay, this is the instance that we have created. Okay, inside this block we have to pass our routes. Okay, हम यहाँ पर अपने routes को पास करेंगे. So just go up, हम यहाँ पर एक routes क्रिएट करने वाले हैं. Okay, so let's say const, let's say routes. Inside these routes basically this is an array, or inside this array guys we are going to define our objects. Okay, so first objects, let's say path equal to home page. This is only /. Okay, अगर हमारे URL में सिर्फ / होगी. Okay, so basically this will open let's say component. So to use components basically we have to first import all components. Okay, so let's say import
let's say home, from, and now this is main.js file, and right here so we have to go inside views folder. okay, क्योंकि हमने views folder के अंदर हमने अपने components को define किया हुआ है. okay, so just this is for current directory, and now we have to go views folder. okay, views folder के अंदर आने के बाद we have to import the file called home.view. okay, so this is the syntax guys to import file. okay, हमने home.view को import किया हुआ, so just copy and paste, क्योंकि हम चारों components को use करने वाले हैं. okay, so something contact, and this is for about, let's say about, and finally this is for services. okay, so just copy and paste. okay, so successfully guys we have imported all components. okay, so this is importing components. okay, so successfully guys अभी तक हमने अपने व्यू राउटर मॉडल को इंस्टॉल किया हुआ है, उसे हमने इंपोर्ट किया हुआ, इंपोर्ट करने के बाद हम उसे यूज कर रहे हैं. नाउ दिस इज टाइम टू मेक राउट्स. ओके, सो इनसाइड दिस राउट्स वेरिएबल वी आर गोइंग टू डिफाइन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. okay, so basically अगर forward slash हो तो we want to open our home component, so just inside this component section let's pass the value called home. next just मैं इसे copy करूंगा, so just copy paste, so this is time for about. okay, अगर हमारे URL में about हो so we want to open our about component. okay, next अगर हमारे URL में something called contact, so we want to open our contact page. okay, and now finally if our URL have called services, okay, this is for the services, so we want to open our services component. okay, so basically guys हमने अपने route section develop कर लिया हुआ है. now we have to use this routes. okay, so basically this is routes parameters, or let's say routes only. okay, next इस routes को हम use करने वाले, so just copy and go inside this router variable. so basically guys inside this block we have a parameter called predefined parameter and something called routes. okay, ये एक predefined parameter of Vue Router. okay, so just we have to pass this variable right here. okay, हमने यहाँ pass कर लिया हुआ. now next we have to define this router inside this view. okay, जहाँ पर हम pass करने वाले हैं, so just copy this router, and now view also contains a predefined parameter called router. okay, so हमने यहाँ इसे pass कर लिया हुआ, so just to save this file go to browser, and now the page has not been reloaded any information. so just if I clean this URL, so just get rid of products, press enter, and now as we can see that guys हमारे URL में एक hash symbol add हो गई है and hash /. but actually हमने अपने route section में define किया हुआ अगर // हो it will open home component जो कि render नहीं हो रही है. okay, so basically just go to app.view, and now inside this app.view we have to define a tag called router view. okay, so just and also close, so let's router view. okay, so just save this file, go to browser, and now as we can see that // means इस path पे आते ही guys इसने home component को hit किया. now if we change this route something called about, press enter, and now this is for the about section called online web tutor is a platform to learn and share skills. और इसकी formatting बिगड़ रही है because we have applied I think some CSS. so अगर मैं इसे remove कर दूँ, so let's only for 10%. okay, save this file, and now it's okay. okay, so ये रही about us page. so if we pass something called contact, so basically guys this is our contact page. okay, and now if I open called services, and now this is services page. so basically guys हमने अपने simple routing techniques develop कर ली, जहाँ पर हमने 4 components means 4 routes create किए, something called // about, called contact and services. okay, so basically अगर मैं जाऊँ editor पे, so what are the steps that we have to follow to make this. okay, so basically guys सबसे पहले हमें Vue Router install करना पड़ेगा. okay, so basically to install that we have to run the command called npm install Vue Router and save flag. okay, after save you need to check that Vue Router actually has been installed or not. okay, so just open package.jsn, and this is a dependency guys actually you will get after installing that. okay, ये actually dependency में add हो जाएगी. okay, so just close that. after installing next we have to import, हमें import करना पड़ेगा, and finally we have to use that. so after using
Remember guys, हम एक instance create करना पड़ेगा of Vue Router. Okay, so that's why we have created a new instance of Vue Router. So inside this Vue Router we have a parameter called routes. Okay, inside this routes हमें routes define करनी पड़ेगी. So basically we have made a variable और ये routes variable guys हमने यहाँ define किया हुआ, and now inside this variable we have 4 routes. ओके जब हमारे URL में अगर /only हो, अबाउट हो, कॉन्टैक्ट हो, सर्विसेज हो, तो हमें कहाँ रेंडर करना है, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय दिस कंपोनेंट पैरामीटर. ओके जहाँ पर हमने कंपोनेंट डिफाइन किया हुआ है, एंड बेसिकली दीज आर द कंपोनेंट्स गाइस एक्चुअली वी हैव इंपोर्टेड राइट हियर. Okay, so after setting all these things, we have to pass this Vue Router instance that we have created inside this Vue section. Okay, जहाँ पर हमने इस प्री डिफाइंड पैरामीटर को राउटर के अंदर पास किया हुआ है. Okay, and finally if we want to use all this routing, then we have to define a tag inside our parent component and something called router view. So ये थी guys हमारे simple video session to demonstrate about that how can we use routing in Vue JS application. Next video session में guys हम main.js फाइल से इन चीज़ों को remove करेंगे, and now actually we are going to set all these routes in a different file. Okay, और उस फाइल को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इन routes को अलग करेंगे एक separate फाइल में. Okay, so if you have any doubt in this video session guys, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.